Hello everyone, welcome to my channel Sarika Krishna Online Classes. This side Sarika, your maths teacher, right? So in this video, I'm going to explain surface areas, their formulas, right, of some solid shapes like cube, cuboid and cylinder, right? What do you mean by surface area? Let us talk about the definition, right? Surface area. Surface area is the area of the outer surface of any figure, right? Suppose here we have to find the area of this face. Side is a square. Area of this face, a square. Area of this face, a square. A square, a square, a square, a square, right? So if we have a three-dimensional figure, we have to find the total area of all the faces. Suppose in a cube, here in a cube, we have 6 faces, right? We have front, back, left, right, top and bottom, right? So whenever we find the area, we have to find out sometimes the lateral surface area and the total surface area. What do you mean by the lateral surface area? Lateral means only area of walls. We don't consider top and bottom. There are 4 walls, right? So we just take the area of 4 walls and area of one wall. This is a square. Cube is a three-dimensional shape which is of the form of a square. It has all the sides, we call them edges, right? All the edges are same. Suppose the edge of the side is A, right? So here, area of this first face, right? It will be A into A square. Similarly, we have 4 walls, A square plus back wala A square and plus this A square. That becomes 4A square. So the area of the lateral surface is 4A square. Now, if we talk about the total surface area में walls plus top and bottom. टॉप में भी वही सेम फेस है A into A, it is a square. यहाँ पे भी टॉप में स्क्वायर है, पीछे भी स्क्वायर है, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द टॉप, वहां पे भी A into A होगा बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ स्क्वायर. तो A square for the top, A square for the bottom. So walls का 4A square, 5, 6, total 6A square because there are 6 faces, 4 walls in top and bottom. So total 6A square. और 1A square क्या है? Area of one face. A square क्यों है? Because cube is form of the square. उसके साइड सेम है, edges सेम है. तो A into A, side into side, A square हो जाता है, right? So I hope the formula is clear. Now, next figure is cuboid. Cuboid, you might have seen a brick, right? So we have a rectangle. अगर rectangle में we just include that rectangle, a three-dimensional figure which is rectangular shape, three-dimensional figure, right? So then we get that cuboid, a brick. उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, a rectangular shape but a three-dimensional shape, solid shape, right? So that is called a cuboid, right? Here, how to find the area of this? Lateral surface means if we just consider the walls only, then we get this area, right? Walls, right? Because we know that here rectangle is length into breadth. Area of this will be LB, right? Area of this will be LB, top and bottom. What about the sides? Here front, here L into H. यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे हाइट है. तो अगर आपको इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू एच, राइट? अगर आपको यहाँ का निकालना है तो ब्रेथ इंटू एच. सो एल इंटू एच, ब्रेथ इन. अगर आप 4 वॉल्स ले रहे हैं, इफ आई नॉट राइट दिस इन कॉमन, आई गेट ट्वाइस कॉमन करते हैं, एच एल एल एच प्लस बी एच, राइट? सो आपका यहाँ फ्रंट में क्या है? एल और एच है, तो वो ये होगा. आपका फ्रंट और बैक तो डबल हो जाएगा, राइट? हियर लेफ्ट एंड राइट है. We have here height, we have here breadth. So B into H, BH इस साइड का, BH इस साइड का, तो BH will be twice. So double LH होगा और double BH होगा, right? So LH कहाँ से आया? L और H फ्रंट और बैक से आया, और BH कहाँ से आया? लेफ्ट एंड राइट से. So इसको हम कॉमन ले लेते हैं. Here H and 2 are common, so we just use this in questions, right? I hope it's clear. I'm just repeating this again. We have this front face. It is a rectangle. Area of a rectangle is length into breadth. Length is L and breadth here it is height H, because इधर वाली साइड ये H है. So L और H मल्टीप्लाई होंगे for the front part, और बैक में भी सेम होगा LH, तो डबल हो गया LH. अगर हम लेफ्ट और राइट का देखते हैं, लेफ्ट और राइट में ये वाला फेस देखते हैं, उसमें हाइट होगी, एक साइड H है और एक साइड B है, तो BH, उधर भी BH होगा. So BH, ये वाला सॉरी B है, this is BH, right? So front, back, left, right. तो आपका ये हो गया 4 faces. So lateral में we just have to write the 4 faces, right? So this is the area how it comes by
this taking out common. So we use this one only. Now if we talk about the total, in the total जो ये वाले हैं इसमें आप क्या ऐड कर दोगे और टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम क्या है, एल और बी. अगर आप ये फेस देखोगे बॉटम, यहाँ पे एल और बी है तो एल बी दो बार आ जाएंगे, राइट. सो आपके जो ये है 2HL 2BH और 2LB भी आ जाएगा. तो 2 सबका कॉमन आ जाता है. तो ये आ जाता है 2LB ट्वाइस ऑफ BH एंड ट्वाइस ऑफ HL, राइट. LH और BH ये तो वॉल्स का था ही. LH HL LH means the same thing and BH, right. ये तो आपके वॉल्स के हैं. जो ये वाला पार्ट है that is for the top and the bottom. Top here is this is L and here breadth is B. So LB top and bottom LB 2LB. So 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड आ गया. I hope clear. Now comes the cylinder. Cylinder आपके घर में है. We have the cylindrical shape is this, top and bottom circular, right. और यहाँ पे तो curved part होता है, right. यहाँ पे. So if their height is h, if the height of that cylinder is h and the radius is r, we have the curved surface area. If we are not including top and bottom, right, सिर्फ walls का लेंगे इस इतने part का, just the hollow part, वो वाला part. So then it is 2 pi RH. 2 pi RH is the lateral surface. I'll rub from here. यहाँ थोड़ा सा इकट्ठा हो गया. Okay. So curved surface area of a cylinder. If we talk about this, the walls means that curved part, right? Then it is 2 pi RH. If we take the top and bottom also, ये वाला भी common लिया क्या? कैसे आया ये? एक 2 pi RH walls का तो है ही. Plus अब टॉप का सर्कुलर पार्ट का सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. बॉटम का भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. इन द टॉप एंड द बॉटम वी हैव सर्कल्स. तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर. बॉटम के लिए भी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर. सो जो ये वॉल्स का था इसमें आप क्या ऐड करोगे, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट. 2 पाई आर स्क्वायर. अब कुछ नहीं किया, यही दो फॉर्मूलाज थे. ये टॉप और बॉटम था, ये वॉल्स का था, कॉमन निकाल लिया. कॉमन क्या आता है, 2 पाई आर प्लस एच. यहाँ से 2 पाई आर निकाल लेते हैं, राइट. यहाँ पे एच बचता है, वहाँ आर बचता है. तो ये दिस मीन्स द सेम थिंग. आर प्लस एच हो या एच प्लस आर, दैट मीन्स द सेम थिंग. सो फॉर्मूला शुड बी क्लियर, राइट. These are the formulas, right. Now you have to learn these formulas. I'm just repeating them again, that how I have derived, I have explained. So in the question you have to directly use the formula, you don't have to derive the formula, right. So now cube, all there are 6 faces, there are 4 walls, sides edges are a, right. If there are 4 walls, so 4a square, lateral means walls, top and bottom मिला के 6 हो जाएगा, 6a square. If we talk about the cuboid, 2h in the bracket L plus B, you just have to learn this. Then this total one you have to learn this, right. The cylinder 2 pi r, h is just the walls area of the walls, and the total surface area including the top and the bottom, this is top. Then you have to learn this. After taking out common, we form this formula. So these formulas are clear. Now we'll be doing the questions of the exercise, children. Okay, students, we'll be doing first question and second question of exercise 11.3 NCERT book, right. Okay, now here we have two solid shapes, cuboid and cube. Here cuboid having length, breadth and height. Here cuboid having the side 50-50-50, right. So we just have to find the TSA of cuboid and TSA of cube, and we have to tell which figure will require lesser area. किसका area less होगा, right. So twice, this was the formula. Just substitute the value of L, B, BH, HL. यहाँ मैंने डाल दी L और B डाला, B और H डाला, H और L. Then you have to multiply. 6 4s are 24, right. 5 4s are 20, 2 zeros. 5 6 are 30, 2 more zeros, right. इसको सारा add up करके into 2 करना है आपको. Then you have to find 14800, right, centimeter square. Calculations थोड़ी बड़ी है, you can do it yourself. TSA of a cube. TSA का फॉर्मूला क्या था, 6 into side square क्यूब का, क्योंकि साइड्स 50 है तो 50 into 50, right. 6 side square, right. 6 into 5 5 are 25, 100, and when you multiply it by 6 you get 15,000 centimeter square. अब किसका एरिया बड़ा है, इसका. किसका लेस है, इसका. So it has been asked out of the two figures which box requires the lesser area. So we will say that cuboid will require lesser area.
Cuboid will require lesser area, right? So what was the first question? Two types of boxes are there, cuboid and cube, and we were supposed to tell which box, right, will require, right, material will be required less, right? So किस में required है material less? whose areas total surface area will be less. इसका less है cuboid का, so cuboid में to make the box of cuboid type the less material will be required, right? So now the second question here, we have a cuboid type suitcase, right? Length, breadth and height given. This is a suitcase and it has to be covered with a tarpaulin. Tarpal hota hai jo aapka tarpaulin, right? So now the breadth of the tarpaulin has been given 96 and we have to find the length of the tarpaulin, right? So we'll find the total surface area of a cuboid, right? And that area will be equal to the area of the tarpaulin. Tarpaulin is just a two-dimensional figure. Length into breadth. Rectangular form होता है tarpaulin. Any cloth is rectangular form. उसमें length होती है, breadth होती है. Height negligible होती है, right? So that will be equal to the area of the tarpaulin. And tarpaulin area will be length into breadth. We have breadth. We'll be finding out the length of the tarpaulin. Okay, now first of all we have to find the total surface area of a suitcase, and suitcase is of the shape cuboid. So what is the formula twice? Length breadth LBPH, LB plus PH plus HL. Just substitute the values of LB, BH and HL and just do the calculations and you'll get the total area. But there are 100 suitcases, right? So the total area of 100 suitcases will be the area of one suitcase multiplied by 100 is this. This much area is required by 100 suitcases. It is covered by 100 suitcases. Now, area of the tarpaulin is length into breadth, right? So area of the tarpaulin, that will be equivalent to the total area of 100 suitcases which has to be covered by that tarpaulin, right? So now length into breadth. Breadth has been given. Breadth of tarpaulin is 96. Here we have the answer. In order to find L, this area divided by 96 and we get the answer 14400 centimeter. 14400 centimeters. So you can give the answer in centimeters or meters also. As you meter is the unit, SI unit. So just divide this by 100. You'll get 144 meters. Centimeter to meter we have to divide by 100. So अगर आपका answer centimeters में just divide by 100 and you'll get the answer in meters. Why I have written answer in meters? Because it is the SI unit, standard unit of length, meters, right? I hope these two questions are clear. इसमें हमने comparison करना था, area निकालना था और बताना था किसका area less है. और here there is one suitcase cuboid form में है, उसका area निकाला हमने total surface area by the formula twice LB plus BH plus HL से. एक suitcase का निकल गया, then multiply by 100 because there are 100 suitcases, right? Now इसका 100 suitcases का area that will be equivalent to area of that tarpaulin. तरपाल के एरिया के इक्वल होगा और तरपाल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि उसमें हाइट नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल हाइट है, राइट? सो तरपाल का एरिया एंड area of the tarpaulin that is equivalent to the area of the 100 suitcases. From there we have the value of breadth. Length can be found by dividing this area by 96 and we found the answer in centimeters. Then we converted into meters by dividing by 100. So these were the two questions. Now the next question is, okay students, now we'll do the third question, number 3rd and 4th of exercise 11.3. In third question, total surface area of a cube is given, right? Side we have to find. What is the TSA of a cube? That is 6a square, right? So 6a square answer has been given. Area तो given है हमारे पास. So in order to find a square, 600, 6 comes down. Divide करेंगे तो 100. A square is equal to 100. In order to remove the square, we just put root, right? अगर हम इसके factors बनाएंगे यहाँ है, तो here it will come 2, 5, 2 and 5, right? So आपका 2 और 5 बाहर आ जाता है, तो answer is 10, right? So what is the side? 10 centimeters, right? We have to put the unit also, right? I'll repeat this question again. Cube बोला और cube का area दिया है, just write the formula for a cube. Total surface area is equal to this much. A square निकालना तो 6 से divide होगा. A square. Whenever there is a square on the left side, in order to remove that square, हम root लगाते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं, वहाँ का root और ये cancel हो जाता है square, right? Like it was square, हम दोनों में square root लगाते हैं left and right side पे. So square और this gets cancelled, right? So I didn't show that. So
राइट 100 है, 100 के फैक्टर्स बनाओ, जब 100 के फैक्टर्स बनते हैं तो 10 बाहर आता है, वैसे भी 10 10 से 100 होता है, सो 100 इज इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर. नाउ हियर देयर इज अ कैबिनेट, राइट, देयर इज अ फिगर इन द बुक. कैबिनेट में लेंथ ब्रेथ हाइट उस कैबिनेट की दी और कैबिनेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, राइट. सो लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, हाइट दिया, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दी है, राइट. नाउ रुखसार डिड नॉट पेंट द बॉटम, उसका सब कुछ पेंट किया, बॉटम पेंट नहीं करते हैं, राइट. सो इट मीन्स आपको जो एरिया निकालना है उसका जितना पेंट किया है दैट इज ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप, बॉटम नहीं है. सो व्हाट इज द 4 वॉल्स, दैट इज कॉल्ड द लेटरल सरफेस एरिया. सो जो सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज लेटरल सरफेस एरिया मीन्स वॉल्स, 4 वॉल्स को पेंट किया प्लस द टॉप को पेंट किया, इसलिए सिर्फ टॉप ऐड होगा, बॉटम नहीं, और टोटल नहीं हम लेंगे, राइट. So here I have substituted the values in order to multiply. ये 1.5 into 2 होता है 3. 2 plus 1 that is 3. 2 1s are 2. Right? 3 3s are 9 plus 2 that is 11. Let me see the unit. Here it's meter. Here it was centimeter. Right? So यहाँ तो हमने साइड निकाली तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखा. Whenever we find the area, we have to put meter square. Area का unit square में होता है. Right? Whether it's centimeter, centimeter square, whether it's meter, meter square, right? So these two questions, they were simple. Area दिया था, side निकालनी थी, और here आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है क्योंकि उसमें बॉटम नहीं है. अगर आप टोटल निकाल भी लेते हो तो उससे आपको बॉटम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो इजी वे इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द वॉल्स, दैट इज लेटरल. लेटरल का फॉर्मूला लगाओ प्लस उसमें टॉप लगा लो क्योंकि टॉप भी हैज बीन पेंटेड. सो यू गेट द आंसर. सो दीज वर question number 3rd and 4th. Now we'll be doing the next question, children. Okay, students, now we'll do question number 5th and question number 6th. I have written the given things. In question number 5th, we have a cuboidal hall, right? And there's a cuboidal hall. Length of the hall is 15, breadth 10, height is 7. And it has to be painted. And here the painting has to be done on the walls and the ceiling. Bottom don't have to paint, right? So one can paint area. There is a can of a paint, right? So that one can, it can paint area equivalent to 100 meters square, right? So let us find the total area of the hall which has to be painted, right? So area of the walls, we know that it is 2HL plus P, and area of the ceiling, that is length into breadth. So just substitute the values and just find out. 7 2s are 14 here. 15 plus 10 is 25. Just multiply this, and 15 into 10 is 150, right? Multiply and add them up. Then you will get here 500 meter square, right? You can do the calculation, just multiply this and add this, and you will get 500 meter square. So this is the total area which has to be painted, area of the wall. Now we have to find out how many number of cans will be required if one can paint 100 meter square. So number of cans required is equal to total area divided by area that one can paint. So 500 is the total area and one can paint 100. So 5 cans will be required. Right? So I'll repeat this again. There is a hall cuboidal, length breadth height different है तो cuboid है. So that has to be painted. The ceiling has to be painted, walls has to be painted, right? और उसमें कितने boxes, कितने paint के boxes आपको लगेंगे? Cans, right? So there are cans of the paint. उसमें कितने paint के cans लगेंगे? So that we have to calculate. So for that, first we should need what is the area of the hall. Area of the hall is area of the walls, that is this, plus area of the ceiling. Ceiling is the top. So after calculating, we get that total area which has to be painted is 500 meters square. Now, how to find the number? The number is always found by dividing what? The total area divided by the area of 1 meter square area, right? So it has been given that 1 can paint 100 meter square. So you just have to take the total area and divide by this 100 meter square. So then you'll get to know the number of cans, and the answer is 5 cans are required, right? So now here, question number 6, we have two types of figures. One is a cylinder and the other is a cube. And you have to tell what is the similarity and what are the difference. Difference obviously will be of area. And same is that both figures, they have same length, means this lengthwise, and same height. Both have same length and same height, right?
77. So what is the difference? Differences of the area. Area, how to calculate here? Area of the cylinder, that is lateral surface area of the cylinder, that is 2 pi RH, right? So how to find the radius here? This is a diameter. Half will be radius, 7 by 2. So radius is required here. So I have found this radius here, 7 by 2. So you have to find a lateral surface area of a cylinder. It is also called curved surface area. 2 pi r. Just substitute the values. 2 pi is 22 by 7, r is 7 by 2, and h is 7. Just do the calculations. Let us cancel this 7 with this, 2 with this, and here 7 2s are 14, 15, 154. This is area, and centimeter square is the unit. So this is the area of the cylinder. Now let us find out the area of a cube also. So here cube area is lateral one. 4 side square. Side is 7. 7 7 is 49. Into multiply this 4 into 49, and that is 196 centimeter square. So these are the two areas and they are different. So this is the difference. And what is similarity? They have same height and same length. Difference of area. Areas are becoming different. So their area is different. And in this question, हमने टोटल एरिया निकाला जिसका वी वर सपोज टू पेंट टॉप और वॉल्स. एरिया निकाल लो और उसको उस एरिया से डिवाइड करो जो एक कैन से जितना एरिया पेंट होता है, राइट? देन यू आफ्टर डिवाइडिंग यू गेट द नंबर ऑफ कैन्स, right? So we have done 6 questions. Now the next one, children. Okay, children. Now we'll do question number 7 and question number 8. Okay. Question number 7 is direct. A closed cylindrical tank, right? Closed means it has a lid also. इसमें ढक्कन भी है. Bottom तो होगा ही. So we have to find total surface area. So what is TSA? Total surface area of a cylinder, right? So the formula is 2 pi r and r plus h, or h plus r means the same. Just apply the values. 22 by 7 is pi, r here is 7, r is 7 and height is 3. So 7 we can cancel, 22, 44, 7 plus 3 is 10, and that comes out to be 440 and meter square. So it was direct, simple calculations, right? 2 pi r, r plus h. Just substitute the values. ये वाला part multiplication में we can cancel, but ये addition में you have to add them up. So 22 into 2, 44, 7 plus 3, 10, and 44 into 10 is 440 meter square. Now this question. Question number 8. Lateral surface area of a cylinder has been given, right? इसका lateral given है, right? What is the lateral surface area? That is given 4224, right? Now here, this cylinder has to be cut from the height wise. It has to be cut. तो जो cylinder ऐसे है वो खुल के ऐसे हो जाएगा तो rectangle बन जाएगा. So when you will cut the cylinder this height wise, यहाँ से कट मारोगे तो ये वाला पार्ट ऐसे खुल जाएगा, ये वाला पार्ट उधर को खुल जाएगा, means it will form a rectangle खुल जाएगा, right? So इसकी जो height है, that is equal to this breadth here, right? So ये आप इसके इक्वल आ गया. So इसका जो एरिया हो गया पूरा ये ऐसे हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, राइट? सो इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया. और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, we know that it is length multiplied by breadth, right? So this L into B will be equivalent to 4224 क्योंकि ये रेक्टेंगल बना किससे है? We have formed this rectangle from सिलेंडर. सो जो सिलेंडर का एरिया होगा वही रेक्टेंगल का एरिया होगा. रेक्टेंगल की ब्रेथ हमें पता है, वी नो दैट, वी आर सपोज टू फाइंड द लेंथ. ब्रेथ डाल लो, 4224. सो हियर 4224 डिवाइडेड बाय 33, इसको आप जब डिवाइड करोगे आएगा 128 सेंटीमीटर. ये आपकी लेंथ आई है. एंड वी आर सपोज टू फाइंड द पेरीमीटर. इट इज अ रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ. So 2 length और breadth add डाल दो अंदर 128. What is breadth is 33, right? इसको आप add up कर दो और 2 से into कर दो. 8 3 11, 3 3 6, 161, और फिर 2 1s are 2, 6 2s are 12, 2 1 3, 322 centimeters. Since it is a perimeter is just a length. So ये सेंटीमीटर में होता है. जब एरिया निकालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, right? So I hope it's clear. I'm just repeating it fast. In this question, closed cylindrical tank. एक टैंक है और उसमें वाटर है और उसमें लिड भी है, ढक्कन भी है, सब कुछ, और आपको मटेरियल का पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो दिस इज अ फॉर्मूला. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर. हियर एक
we have the lateral surface area of cylinder is given. What do you mean by lateral surface? walls का, उसमें top और bottom नहीं है, so lateral ही था वो. और जो lateral वाला part था, ऊपर top और bottom नहीं है, just hollow सा cylinder है, उसको आपने cut किया है height wise, right? वो खुल के ऐसे rectangle बन गया, so वो rectangle ऐसे बन गया, उसमें top bottom तो था ही नहीं, वो तो hollow था, right? So it became this. So इसका एरिया इसके इक्वल होगा. So एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. So इसका एरिया ऑलरेडी गिवन था, इसकी ब्रेथ गिवन थी, सब्स्टिट्यूट कर लो एंड फर्स्ट फाइंड आउट द लेंथ. देन आफ्टर फाइंडिंग द लेंथ यू आर सपोज टू फाइंड द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर के फॉर्मूला में लगा लो, ट्वाइस एल प्लस बी, एल और बी की वैल्यूज डालो, जस्ट कैलकुलेट द पेरीमीटर. सो दीज वर द question number 7th and 8th. Now 2 more questions are left. Let us do those also. Okay children. Okay students. Now question number 9th and 10th, last 2 questions. In question number 9th, what is given? A road roller, right? We have a roller that is the shape of a cylinder, right? उसमें एक stand लगा होता है, ऐसे डंडा सा लगा होता है. उस रोड रोलर को you just push, the gardener just push on the that garden, right? Okay, so now here what is given? The revolutions covered by this, right? That is 750. means वो पूरे एरिया को कवर कर लेता है 750 revolutions. revolution means जब एक सिलेंडर का एक राउंड कंप्लीट होता है, वो रोलर एक राउंड कंप्लीट करता है, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट करता है, ऐसे ऐसे there are 750 revolutions, right? In 750 revolutions, the road roller is able to complete that whole area. So we have to find the area, whole area, right? So what we'll be doing, we'll be finding the curved surface area of a roller. Why curved surface area? क्योंकि roller moves this way. उसका टॉप और बॉटम जो ये सर्कुलर पार्ट है वो ग्राउंड में नहीं लगते हैं, ये दोनों पार्ट्स ग्राउंड में नहीं लगते हैं, राइट? सो दे आर नॉट टच्ड ऑन द ग्राउंड. ऑन द ग्राउंड ओनली द वॉल पार्ट, द कर्व पार्ट इज touched. So we are supposed to find curved surface area of a roller, that is only the curved surface area, right? Circular part नहीं लगता, ये पार्ट नीचे टच नहीं होते हैं, right? Now 2 pi RH, right? That you can do 7, 6 and 42 and just multiply this, you'll get this. Now area covered in 750 revolutions. ये तो area हुआ covered by one round, one circular part, one lateral surface area. वो one lateral surface area कितना आया? सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना. अब ऐसे ऐसे 750 रेवोल्यूशंस हैं. सो 750 रेवोल्यूशंस में कंप्लीट हो जाता है, वो एरिया कवर हो जाता है, राइट? सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय 750 रेवोल्यूशन, जस्ट मल्टीप्लाई दिस आंसर बाय दिस. दैट्स अ बिग नंबर, सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ यू वांट टू गिव द आंसर इन मीटर स्क्वायर, आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है. 1 सेंटीमीटर का एक 100 लगाओ, दूसरे सेंटीमीटर का दूसरा 100 लगाओ, जीरोस कट करो, 1980 meter square will be the area that is covered by that roller in 750 revolutions. I hope it's clear. I'm just repeating again. एक रोड रोलर है, वो सिलेंड्रिकल होता है. रोड रोलर जो है ऐसे जाता है, या गार्डन में उसको लगाते हैं आप, राइट? कट द ग्रास, टू प्रेस द ग्रास, राइट? सो उसका सर्कुलर पार्ट नीचे टच होता है, राइट? सो इट्स दैट टॉप एंड बॉटम, द सर्कुलर पार्ट वो टच नहीं होता, कर्व्ड पार्ट टच होता है, राइट? सो यू हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ roller, that is a cylinder. Roller is in the form of a cylinder. And the formula for the curved surface, curved बोलो या lateral बोलो, L भी लिख सकते हैं, no problem in that. Lateral surface area, curved surface area means the same thing. So curved lateral surface area is 2 pi RH. Just do the calculations and कितने revolutions थे? 750, तो multiply कर दो 750 से. Now this question now here, right? There is a cylindrical type कंटेनर एंड देयर इज अ लेबल. उतने में लेबल लगा है, लेबल कितने में लगा है? इतने पोर्शन में, ये लेबल है आपका, राइट? एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट लेबल, राइट? और क्या गिवन है? ये सिलेंडर, इसका डायमीटर गिवन है, तो रेडियस इसका हाफ होगा. सो रेडियस विल बी डायमीटर का हाफ, दैट इज 7. नाउ हियर हाइट इज टोटल 20 हियर, राइट? 20 is the total height of the cylinder till here, राइट? ये आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर है. हियर 2 मीटर का यहाँ पे बैंड छोड़ा है, 2 मीटर का बॉर्डर आपके पास टॉप में और बॉटम में है. सो इन ऑर्डर टू टेक द हाइट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस पार्ट, इतना भी तो सिलेंडर ही है, राइट? सो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस हाइट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 20, 2 ऊपर से माइनस कर दो, 2 नीचे से. आपका 2 यहाँ पे है, 2 और ये भी 2 है सेंटीमीटर. 2 + 2 4, 20 में से 4 माइनस करो, 16. सो लेवल की हाइट है 16. लेवल का रेडियस तो सेम ही होगा, राइट? सो लेवल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ
सिलेंडर, सो सिलेंडर का आप लगाओगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ लेवल, लेवल में भी तो टॉप और बॉटम में तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो लेवल तो सर्कुलर पार्ट में है, कर्व्ड पार्ट में, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ लेवल दैट इज 2 पाई आर एच। लेवल क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2 पाई आर एच। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर ऑफ पाई इज 2, पाई की वैल्यू डालो, आर की डालो और एच की डालो, 7 कैंसिल हो जाता है, दिस इज 44 into 16 and this when you multiply you get okay 704 and it's centimeter square. So this is the area of just the level. So क्या करना है हमने, हमें हाइट दी हुई है सिलेंडर की, हम when you have to find the area of the level तो उसको you will require the height of the level only. So height of the cylinder से आप टॉप 2 का, नीचे का टॉप का बॉर्डर 2 and 2 4 subtract कर लो, so 20 में से when you subtract 4 you get 16. So the height of the level is 16, radius same होगा, diameter का half 7. So you have to find the curved surface area of a level, and level is a cylindrical part. Curved surface means 2 pi r h, 2 pi r h में values डालो, pi की, r की and h की, and you'll get the answer 704. Okay children, so I'm done with this exercise 11.3 of NCERT book. Okay, thank you children, stay blessed and work hard.